Yeah, okay. So Puka is also here. Right. Okay, so as a review for this, you'll need to know your sets, relations, functions, operations, groups, rings, fields. Okay, so here we are. The linear algebra is a branch of algebra, clearly. Is a in which we study an algebraic structure called a vector space. So it's a study of vector spaces. Okay, so the prerequisite that I'm mentioning is in the context of an algebraic structure. So that is why you have to know your sets, logic, of course, sets, relations, functions, operations. So let me just review. Logic, sets, relations, functions, operations, groups, rings, field. That is just definitions of these. Okay, definition of with examples. So the most basic examples, not the whole lot of them that we did in group theory. So this is the basic stuff. Now, when you look at the name vector space, okay, before we define a vector space, let us look at the place where we came across vectors for motivation. Before defining a vector space, let us look for motivation at the set of the algebraic properties. Since I'm interested in the algebraic part, the algebraic properties of vectors. So we've all come across vectors from our school days, and then we may have studied it again in our first year or something, right? What exactly were we able to do with vectors? Vectors, say V, which we were able to write as an ordered triplet, AI plus BJ plus CK, if you remember, which I can also represent by the triplet ABC, which is a member of R cubed. So you can think of vectors as members of R cubed. Okay, so for us there were these directed line segments in space. क्वेश्चन हाँ मैम लीनियर अलजेब्रा तो एक क्वेश्चन ये कि इसमें लीनियर क्या है और दूसरा ये कि यहाँ पे वेक्टर्स कैसे आ गया वो तो linear algebra का जो finally why vector spaces become important. Of course, it is the branch which deals with vector spaces. That is the definition of linear algebra. But वो linearity की बात ये है कि जब आप it is connected with matrices and systems of linear equations and solutions of systems of linear equations. वो उसकी application में आएगा. I am not going to compromise on the abstract flavor by taking us from matrices to that. I mean, a lot of people do that, but I don't want to do that. Okay, I want to keep it abstract, unknown. So linear algebra is just a name. It's because of the major applications
of vector spaces is in the field of solution of systems of linear equations. Okay, अब उसी पे छोड़ दो तो ठीक है. लीनियर क्या है वहीं से आएगा. मतलब मैम इसका मेजर पार्ट मैट्रिसेस से डील करता है. डील करेगा एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस में मैम बट उसके अलावा भी कुछ तो होगा मैट्रिक्स के अलावा. वो देखा जाएगा. तुम कुछ मैट्रिक्स ही होता तो सब्जेक्ट का नाम ही मैट्रिक्स के ऊपर होता. तुम कुछ चीजें मिस्ट्री की तरह छोड़ दो ना. वो देखा जाएगा बाद में कि वो क्या एक एप्लीकेशन बस है कि सारा कुछ है ना. हम उसका एब्स्ट्रैक्ट फ्लेवर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते. अब तुम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो तो पहले थोड़ी पता करना है कि ग्रुप्स आए कहाँ से. वो तो हमारे क्लासिकल अलजेब्रा कितना पढ़ा है लोगों ने. उन्हीं का एब्स्ट्रैक्शन फिर आके ग्रुप्स बनता है ना. तो हम जब ग्रुप्स पढ़ते हैं तो हम सारा थियोरेटिकल फ्लेवर पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा था कि है वो क्या है. यहाँ पे तो नेम अलग है चीज अलग है. कोई बात नहीं. हो सकता है कि नेम अलग है चीज अलग है. ठीक है, कोई बात नहीं. उससे तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है. ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन है, ये वेक्टर स्पेसेस के ही बारे में. और लीनियरिटी की बात हुआ ये कि हो सकता है कि मोटिवेशन इसका आया हो मैट्रिसेस से. ठीक है, लेकिन अभी हम उसको उस एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं. हम सिर्फ एप्लीकेशन के दौर पे में देखेंगे. फाइन. इसीलिए हम इसको वेक्टर स्पेसेस कहते हैं. तो वेक्टर्स से कनेक्टेड है ये. तो हमारा मोटिवेशन होगा वेक्टर्स. जो हमने वेक्टर्स आपने पढ़े होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत वेक्टर अलजेब्रा किया है, और जिन्होंने मैकेनिक्स पढ़ा है उन्होंने तो काफी हद तक वेक्टर्स इस्तेमाल किए हैं. Okay, let's just look at two very basic properties of इसमें किस तरह के operations थे. So the operations that were available, which were of any interest to us, operations that we used in the set of vectors were, well, what were we able to do? एक तो ये था कि अगर दो वेक्टर्स हैं तब उनको ऐड कर सकते थे. ओके, so you can take v plus w. There was an addition of vectors. There were many ways of defining addition. The geometrical directed line segment way of defining vector addition was कि अगर आप वो दूसरे वेक्टर को इसके एंड पॉइंट से शुरू करो, क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स होते हैं, एंड देन यू गो फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड, दैट इज कॉल्ड v plus w. Okay, even if you don't remember all that, the simple way of remembering it is that if you have x1, x2, x3 as the first vector, x1, x2, x3, that is x1i plus x2j plus x3k, and you have y1, y2, y3 as the second vector, then the sum was defined. I mean, it turned out to be, whether you look at it like this or like this, turned out to be x1 plus y1, comma, x2 plus y2, comma, x3 plus y3. ये पॉइंट वाइज डेफिनेशन था ये वेक्टर सम का. So it would be x1 plus y1 I plus x2 plus y2 j plus x3 plus y3 k. I, j, k are the unit vectors along the x, y and z axes. That also you might recollect कि आपका अगर i, j के axes हैं i, j, k. So every vector which could be made to start from anywhere, but you can start it from the origin here also. Then I could break it up into three parts. वो उसके coordinate geometry में जैसे हम 3 coordinates निकालते हैं, तो finally I could write this vector as ai plus bj plus ck, और x1i plus x2j plus x3k. तो वेक्टर सम इस तरह से डिफाइन था. ओके, एंड व्हाट इज इट दैट वी फाउंड अबाउट दिस वेक्टर सम. इसकी क्या प्रॉपर्टीज थी. इस सम की प्रॉपर्टीज थी कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो उनका सम भी वेक्टर्स है, तो क्लोजर वाज ट्रू, है ना. देन वी आल्सो फाउंड एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू. अगर आप इसको करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ भी ट्रू है. फिर हमने देखा था कि आबिलियन लॉ भी ट्रू है. v plus w and w plus v is the same. Then we found that there is a zero vector which has zero magnitude. It has an arbitrary direction, but it has zero magnitude. So 0 plus v was always equal to v. तो identity भी है इसमें. और
v का एक माइनस v भी था which was just same vector v in the opposite direction with the same magnitude but just facing the other side. तो उसका एक नेगेटिव भी था and it would be minus x1 minus x2 minus x3 in terms of the components, we call them components. All right, so this under plus, we found under plus the set of vectors that is r cubed was or is an abelian group. तो एक तो ये ऑपरेशन था प्लस, फिर और क्या था इसमें? You see, there were other things that we did, but that were not very satisfactory. Let me write them in any case. अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इट वाज नॉट समथिंग वेरी सैटिस्फैक्टरी, क्योंकि उसमें तो क्लोजर भी नहीं था. आई मीन इट वाज अ वेक्टर बट क्लोजर वाज देयर, बट उसमें एसोसिएटिव लॉ नहीं था. क्लोजर तो था. The cross product of two vectors is a vector. So the second thing we had was, say, v cross w, okay, which did satisfy closure, but it was not even a semi-group because it is not associative. V cross v1 cross v2 cross v3 or a cross b cross c with the bracket changed was very different, all right, because the direction itself would be very different. A cross b was perpendicular to both a and b. You don't have to know all of this, but I'm just referring to it as an idea. So this was not even associative, and therefore it was not even a semi-group. Identity का तो कोई सवाल नहीं है ना? तो यूनिटी नाम की चीज या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें कोई मतलब नहीं था. तो इसमें हमें जो कोई भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज जो चाहिए होती हैं वो कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, अंडर विच r cubed was not even a semi-group because associative law was not there, and a cross b was not b cross a, it was minus b cross a. Okay, it was kind of anti-abelian. So because not associative, and then even other properties were very problematic. So we are not particularly, there's no real multiplication that we have in this set. कोई मल्टीप्लिकेशन नाम की कोई अच्छी इंटरेस्टिंग ऑपरेशन नहीं था. v डॉट w which was x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3, v dot w was actually a real number. It was not in r cubed. So under dot, under which r cubed was not even closed. There's no closure. क्लोजर भी नहीं था. एसोसिएटिव लॉ को तो सवाल ही नहीं पैदा होता है. ए डॉट बी डॉट सी डजंट एग्जिस्ट बिकॉज वन ऑफ बी डॉट सी इज अ स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड अ स्केलर डजंट एग्जिस्ट. तो ये सब में कुछ हमारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज नहीं आ रही. आई कुड नॉट ट्रीट देम एज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये रिंग नहीं बन रहा है, ये रिंग नहीं बन रहा है. इसमें एक ही ऑपरेशन है काम का, विच इज प्लस. लेकिन एक और चीज होती है इसमें, नंबर 4, that we have something called alpha v, where alpha is a scalar. Alpha is a scalar, means it's a real number called a scalar. और इसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है. दिस इज ऑफ कोर्स अ मेंबर ऑफ r cubed and it has certain properties under which we have the following properties. Alpha v plus w is alpha v plus alpha w. ये हम लोग यूज करते हैं थ्रू आउट. अच्छा, यहाँ नहीं लिखा है अभी, बस नीचे का लिखा. ये तो मिटा दो ना. ये v इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck. Yes, ma'am. Okay, so we have this property. We've always took this for granted. Alpha into x1i plus x2j plus x3k plus y1i plus y2j plus y3k. पहले इन दोनों को combine कर लेंगे. फिर alpha times that will be alpha. You can easily see that these two are the same. So one property was that, like this
is alpha v plus w is alpha v plus alpha w. V and w are vectors and alpha is a scalar. Then I found also that alpha plus beta, you can add two real numbers, and if you take that times v, this is alpha v plus beta v. ये एक चीज थी जो हम कर सकते थे वहां पे. फिर एक और चीज थी दैट इफ यू मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आर एक फील्ड होता है तो उसमें सम भी है प्रोडक्ट भी है, अल्फा बीटा इंटू वी विल बी द सेम एज अल्फा इंटू बीटा वी, एंड विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज बीटा इंटू अल्फा वी. Okay, that because alpha beta and beta alpha are the same. And number 4, 1 was a real number, and 1 into v, 1 v, alpha v, 1 v, dot नहीं लिखते हैं, we just write 1 v is equal to v. It seems obvious, but ये सब हम we used to take this for granted with this thing which we call scalar multiplication. Okay, so हमें ये काम का है और एक ये काम का है, इन दोनों की कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है हमारी जो इंटरेस्टिंग है. सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. Scalar multiplication has been popping up many times in our study of sequences and all also. जब हम algebra of limits करते हैं ना, एक स्केलर वाला भी आ जाता है. That an tends to l, then k times an tends to k times l, तो वो स्केलर मल्टीपल हो जाता है an का. हाँ, और इसी तरह से हम और जगह भी ये स्केलर मल्टीपल will come in. Those of you who are doing uniform convergence with me, they will also see that scalar multiple is coming. जिसने series किया है, all of you have done series, तो sigma un है तो k times sigma un, sigma of k un is k times sigma un, उसमें भी स्केलर मल्टीपल आ जाता है. तो ये स्केलर मल्टीपल बार बार आता है, लेकिन हमने कभी उसको फॉर्मली कोई स्टेटस नहीं दिया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी as a kind of operation. Right. So what exactly is this? And these are the two things that stand out as the nice properties of vectors, the two operations which have some decent properties. एक तो abelian group बन जाता है बहुत अच्छा, और एक ये स्केलर मल्टीपल होता है जिसका कनेक्शन एडिशन के साथ ये है ना, और द प्रोडक्ट इन द फील्ड आर, उसके साथ भी ये स्केलर मल्टीपल का ये कनेक्शन है. तो इससे हमारा मोटिवेशन आता है, और हमारा मोटिवेशन ये है कि सबसे पहले आर की जगह कोई फील्ड हो. आर इज अ फील्ड, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आर आई टेक अ फील्ड एफ, and then I'll take a non-empty set which I will call V, which satisfies, it has an operation called plus, under which it is an abelian group, and then it has something called scalar multiplication, and these two things make it into a vector space by definition. Motivation is coming from the set of vectors that we have studied extensively. Classical maths में तो vectors बार बार पढ़ते थे, बहुत एडवांस, उसमें कर्ल, ग्रैड, डाइव, तरह तरह की चीजें हमने की हैं, लेकिन अब हम सिर्फ इसकी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, और हम इसको मोटिवेशन के तौर पे लेते हुए आई एम गोइंग टू डिफाइन अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड. सो आर की जगह हम फील्ड लेते हैं. हाँ ठीक है, बाकी तो मिटा दूं. So this motivates us. So we use the operations in 1 and 4 as motivation to define a vector space V over a field F instead of R. Okay, so this V instead of R cubed. Huh. So just now you had said that instead of odd we will take a field F. Yeah. And then there was some second instead of something. Now V की जगह R cube की जगह V. I'm abstracting R cube to V, and I'm abstracting R to F. Any fields,
because I need to add and multiply in that field. ना, the multiplication चाहिए मुझे, unity चाहिए, addition चाहिए उस field में. So V is some higher power of that. No. It's a totally unknown set. All I want is to satisfy the properties of 1 and 4. The rest will all become examples, particular cases. But it's an unknown set. हमें जैसे groups में एक unknown set होता है ना, तो हमारे vector spaces में भी unknown set है. अब उसको define करते हैं तब पता चलेगा है क्या वो. What is it that we need to assume about it? So I'm sorry, Nandita, can you share what is the meaning of an unknown set? A set which we don't know what the members are. I see. What is a group? Do you know what the members of the group are? मैम इसका थोड़ा मीनिंग बता दीजिए. वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड है. हाँ, इसको this is the language used. Okay, with respect to a field F, let's try it. Instead of R. तो ये जो R cubed है ना, vectors, it satisfies certain properties with respect to this R. R is the scalar, set of scalars, ना real numbers. तो R की जगह हम कोई field अगर लेंगे तो हम ये लिख सकते हैं ना, multiplication, product of two numbers, the sum of two numbers, the unity of the field. तो field, we are taking a field. Please don't talk about dimension, Lucky, we are very far from that. हाफ बेक नॉलेज से कोई फायदा नहीं. V is an unknown set. Okay, so we are going to abstraction. क्या होता है अगर हम लोग ऑनलाइन मत देखा करो, ऑनलाइन दिखाता वो तो पहले से कुछ चीजें सुन के आ जाओगे, देखोगे तो फिर यहाँ पे क्या सीखोगे. ओके, सो हम जैसे कि ग्रुप्स की बात करते हैं. ग्रुप्स करने के पहले आप क्लासिकल अलजेब्रा करते हैं, आप मैट्रिसेस पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं, है ना. वो सब चीज पढ़ने के बाद आप कहते हैं कि कुछ पैटर्न्स हैं विच आर कॉमन. Things like, if two things are elements of it, then the sum is an element of it. If two things are elements of it, then the three elements, then A plus B plus C is A plus B plus C. Complex numbers में भी वही हो रहा है, matrices में भी वही हो रहा है. So what is this pattern? So I replace these classical systems. Mankind replaced these classical systems with an abstract set, which we don't know what are the members of it. But it has an operation on it, which has these properties, then we call it a group. When we are studying group theory, we don't know what set we are talking about. Okay? We did 10 examples, but those are just 10 examples. There can be infinitely many more examples. And when you study the structure, all right, the algebraic structure, you are not talking about a specific set that you know what is the members. Okay, it's just a set, and it has an operation, and it has these properties under that operation. So abstract algebra or abstract mathematics, whether it is analysis or algebra, analysis also later on will leave R behind. We are going to talk about distance concept in an unknown set, and that's when we study metric spaces. And then we are going to leave distance behind, and we'll study the notion of location in an unknown set. That's called a topological space. So the power of abstract mathematics is that when you do things in the abstract, it's like doing things for divinity and then applying it to all various model examples. Because once you've proved it in general for everything, then you can apply it to any particular example, which might otherwise be very complicated to deal with. Fine? So do not ask me what is an unknown set. An unknown set is an unknown set, period. It's a set which we don't know what its members are. Okay, so I don't want to lose the abstract flavor of the subject, and that is why I'm starting with vector spaces rather than start with linear equations. Okay. So we are going to do an abstraction from this. Now, the motivation has come from this particular example, but that is going to lead us to an abstract definition. Okay, so let us see what we're going to do. First, let us revise what is the meaning of a field. Just to remind everybody. Let us first recollect the definition
of a field. Okay, so that definition was, let F be a non-empty set. Okay, it's unknown. Let F be a non-empty set and let plus dot be operations on it. Unknown operations but denoted by plus and dot. Such that, and the following properties were true. And I'll call them A1, A2, A3, A4, A5. So we find that is what we used to call an abelian group. Okay, F under plus is an abelian group. Total 11. Yeah, 11 properties. Yes. So if A and B belong to F, then A plus B belongs to F. That's closure. And A plus B plus C, A plus B plus C is equal to A plus B plus C for all ABC belong to F, associative law. Okay, then we have the abelian law. A plus B is equal to B plus A for all AB belong to F. There exists an element which we denote by 0 belonging to F, such that A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A for all A belong to F. Of course, I don't have to write both because it's abelian, but I'm still writing both. And then for each A belong to F, there exists something that I denote by minus A, such that A plus minus A is minus A plus A is equal to 0. So in other words, A1 to A5 mean that F under plus is an abelian group. And then you have M1, M2, M3, M4, M5. Okay, so A dot B belongs to F for all AB belong to F. Okay, so I can write it in the same format as the earlier one. If A and B are members of F, then A dot B is a member of F. This is called closure. Then A dot B dot C is A dot B dot C for all ABC in F. And then A dot B is equal to B dot A for all AB in F. Then there exists a 1, an element which we denote by 1, and it has to be different from 0. Alright, let's write it in two separate steps. There exists 1 belong to F, 1 different from 0, such that 1 dot A is A dot 1 is equal to A for all A belong to F. 5 non-zero elements in F have an inverse. There exists an element which we call A inverse belonging to F, such that A dot A inverse is A inverse dot A is equal to 1. So in other words, F dot is a abelian semigroup with identity in which non-zero elements have a multiplicative inverse. I can't say F dot is a group, abelian group, because 0 doesn't have an inverse. So it's F dot is an abelian semigroup with identity different from the additive identity. The multiplicative identity and additive identity have to be different, such that every A not equal to 0, or in which every non-zero element has an inverse. That is the 10th property, A1 to A5, M1 to M5, and then the last property I can call D distributive law. A dot B plus C is A dot B plus A dot C for all ABC belonging to F. That's it. The 11 properties. Left and right distributive law are both the same.
in a field. So these are like the properties of R, na? Except that now I don't have R, I have an F, a field F. So you can write here distributive laws. Anyway, those names you know, you can write them later. So then F plus dot, last line. Then after writing all this, then F plus dot is said to be a field. A field. So this is our revision of the meaning of a field, first of all, which is central to everything. That's why I said you need to, it's better to do group theory before you do field, before you do vector spaces, because field के बगैर तो definition ही नहीं होगा vector space का. Or fields is, requires some understanding of groups, because this is a group, this is a kind of semi-group. Alright, Abhinav? मैम एक ही बात था मैम, ये 0 और 1 जो है ये हम लोग यही सिंबल यूज करेंगे क्या इसके लिए आइडेंटिटी के लिए? हाँ हाँ. These are just symbols, no? But a field is an unknown field. It may be a field of trees. So there's a 0 tree and there's a 1 tree, unity. This is called the unity of the field. It's denoted by 1. Okay? It's just a convention. You could denote it by E, but we generally denote it by 1. And this is always denoted by 0. Even in a ring, जब फील्ड नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ क्लोजर एसोसिएटिव लॉ पे रुक जाता है और फिर M3, M4, M5 नहीं होता है, D होता है लेफ्ट और राइट दोनों, तब वो रिंग कहलाता है. ओके, बट हमको रिंग से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा फील्ड चाहिए. तो ये फील्ड को हम याद कर रहे हैं अभी. एक दो प्रॉपर्टीज फील्ड के हैं जो रिंग में भी होती हैं, वो मैं अभी लिख देती हूँ ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो. हाँ, पार्डन. हाँ, अकुका. Which one? I was just trying to remind myself which one was ring. Ring was basically if you have all these, and then you have these two, and then you have D with the two types of D. There's a D1 and a D2 there, because you have a left and a right distributive law. B plus C dot A is B dot A plus C dot A. That is also true. So it has 5 plus 2, 7 plus 2, 9 properties. Ring has. So field is a special kind of ring. It's a ring which is commutative, which has unity, and in which every non-zero element has an inverse. उसको हम division ring भी कहते थे. A commutative division ring which is different, in which 0 and 1 are different, becomes a field. हाँ, अभिनव. मैम एक डाउट है. मैम हमने यहाँ पे D में जो लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अभी जो मैम आपने एग्जांपल दिया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, उसमें प्लस भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना? नहीं, वो अलग चीज है. ये तो सारे स्केलर्स और स्केलर्स के बीच में हो रहा है भैया. वहां पे स्केलर और वेक्टर का कंबाइंड कॉम्बिनेशन की बात हो रही है. वो इससे बहुत फर्क है. अभी तो सिर्फ एफ के अंदर हो रहा है, अभी तो आया ही नहीं. अभी तो सिर्फ ये आर ही है. आर, ये आर 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 सभी है. वहां तो वी अलग चीज आ गई ना. उसमें दोनों तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रू, लेकिन अभी हम उस पे आए नहीं. अभी तो हम फॉर्मल डेफिनेशन में सिर्फ फील्ड पे अटके हुए हैं. अब वेक्टर स्पेस तो आने वाला है. जब आएगा तब उसकी बात आएगी. ठीक है. तो मैम ये सब आर की तरह, बिल्कुल आर की तरह. ये फील्ड है. जितनी प्रॉपर्टीज, वेक्टर्स का एक सेट अलग से लेना है. और क्या, वेक्टर अलग चीज है और ये फील्ड अलग चीज है. उन दोनों को हम कंबाइन करके एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं. कंबाइन ऐसे करते हैं कि इट इज विद रेफरेंस टू अ फील्ड. द वेक्टर स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस विद रेफरेंस टू अ फील्ड. दे टू डिफरेंट सेट्स. वन इज अ फील्ड एंड वन इज नॉट अ फील्ड. वी में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा आपका, लेकिन एफ में तो पूरा मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है. भी एक अननोन सेट होगा अभी. हाँ हाँ, अननोन ही है. अननोन से क्या नुकसान है आपको? ये भी अननोन है. A field is a field is an abelian ring with unity. We don't call it abelian ring. Commutative ring with unity. Okay. Commutative ring with unity in which every non-zero element has a inverse under multiplication. Thanks. मैम मेरा दो क्वेश्चंस थे. हाँ.
ये जो आपने रिंग में बोला लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटर, तो यहाँ पे वो जरूरत नहीं है क्या? नहीं, यहाँ नहीं जरूरत है, बिकॉज दिस इज अबेलियन अंडर मल्टीप्लिकेशन ना, ये अबेलियन है। अंडरस्टूड, हाँ। सो जस्ट या क्लैरिफिकेशन ही था। या और दूसरी बात, मैं रियल नंबर के अलावा एनी अदर एग्जांपल्स ऑफ अ फील्ड? या आई जस्ट राइट ना, यहाँ पहले मिटाने तो दो, देन आई राइट सम एग्जांपल्स, ठीक है? I'll just give very few examples because we're not going to go extensively into fields. Examples of fields are Q. Set of rational numbers is also a field. Alright? Set of complex numbers is a field. Okay? And ZP, where P is prime, are all fields. There may be many others, but these are all fields. Set of integers is not a field, okay, because उसमें inverses नहीं होते हैं, multiplicative inverses. ZP क्या चीज है? ZP is the set of all the Zn where n is a prime number. अच्छा अच्छा, Under multiplication modulo, sorry, under addition modulo P, addition and multiplication modulo P, multiplication modulo P. So उसको plus P and dot P कहते थे ना. So A plus B is the remainder when A plus B is divided by P, and A dot B is the remainder when A dot B is divided by P. कितना तुम लोगों ने Zn किया है? सुबह से रात तक हम लोग Zn कर रहे थे ग्रुप थियरी में. नहीं मैम, P कभी नहीं देखा अलग से. P देखा तुमने मेट्रिसेस ओवर ZP स्टडी किया और उसमें आपने इनवर्स भी निकाला मैट्रिक्स का, मेरे साथ बैठ के निकाला है. ये मैट्रिक्स है, हाँ, GL, ये SL 2 ZP, SL 2 R करते थे ना, और the set of 2 by 2 matrices, non singular matrices over R, that was GL 2 R. फिर SL 2 R था वो जिनका डिटर्मिनेंट 1 था. देखो बेसिक जो ग्रुप्स का तो मैंने कहा था शुरू का कर लो रिवाइज, बाकी भी थोड़ा रिवाइज कर लोगे तो फायदा होगा. वो एग्जांपल्स एक बार देख लेना. तो ZP was a field and that's why you could have matrices 2 by 2 matrices not just over R but over field P, ZP. तब हम उन दोनों को जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल ऑपरेशंस आर मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉड्यूलो P, और उसके बेसिस पे एक आप लोगों ने इनवर्स निकाला था. गो बैक एंड लुक, वी हैव डन इट in class itself. Okay, Viplav, are you there? Yes, ma'am. Okay, तो you remember हमने ZP किया था and हमने inverse निकाला था मैट्रिक्स का with respect to the field ZP. मैम एक हाँ क्वेश्चन है. हाँ, इंटीजर्स इन जनरल नहीं है फील्ड, लेकिन ZP फील्ड है. हाँ, ZP field है. ZP is different, integers are different. Integers modulo n are different from integers. ये तो समझ आ गया मैम, ZP तो समझ आ गया क्यों है फील्ड. Z क्यों नहीं फील्ड है? Z field नहीं, 2 का इनवर्स है क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है. हाँ, तुम्हें मालूम है, तुम खुद ही जवाब दे सकते हो. Anything other than 1 and -1 doesn't have an inverse under multiplication. So the inverse in ZP exists only because it's this modulo P. Yeah, exactly. So if you take a prime number, like you take Z5, okay, then you will find that under multiplication also, everything except 0 has an inverse. बल्कि उसको हम UP कहते हैं फिर. Under multiplication, all elements other than 0 become invertible and they are they form a field. तो in fact UN होता है, देखो Zn होता है. Under plus Zn is a abelian group. Under plus Zn is an abelian group. Under dot it is an abelian semi-group with identity, but it doesn't have inverses. Zn, distributive law is true, so it's a ring. Okay, but when I look at the invertible elements under multiplication of Zn, that it's an abelian semi-group,
विद यूनिटी विद आइडेंटिटी, तो उसके इन्वर्टेबल एलिमेंट्स वो हैं जो n से रिलेटिवली प्राइम है, और उन इन्वर्टेबल एलिमेंट्स का कलेक्शन फिर अपने आप में एक ग्रुप बन जाता है जिसको हम UN कहते हैं. लाइक U8 इज 1357. कितना यूज किया हमने U8 को, तो ये ग्रुप बन जाता है अंडर मल्टीप्लीकेशन. नाउ इन पर्टिकुलर अगर n खुद प्राइम है, then everything from 1 to n minus 1 is relatively prime to n. Relatively prime. So 1 to UP becomes basically the numbers 1, 2, 3, 4 up to p minus 1. And ZP becomes a field because everything in ZP other than 0 has an inverse. Okay? So these are examples of fields. मैम यूपी जो आपने कहा वो नहीं है ना फील्ड, क्योंकि उसमें जीरो नहीं है. हाँ, यूपी फील्ड नहीं है. यूपी में हम सिर्फ, यूपी का मतलब है उसमें एक ही ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन. क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में जो अलजेब्रा था हमारा ग्रुप थ्योरी, उसमें हम सिर्फ एक ऑपरेशन वाले सेट्स को स्टडी कर रहे थे, लेकिन हमें फील्ड करना पड़ा. नॉट ओनली कि मुझे अच्छा लगता है कराना, लेकिन हमें फील्ड करना पड़ा क्योंकि जब आप SL2R या GL2R कर रहे थे तो यू आर टॉकिंग अबाउट मेट्रिसेस. मेट्रिसेस आर ऑलवेज ओवर सम फील्ड्स. ओके, सो वो फील्ड का आइडिया तब हमको मुझे देना पड़ा, इवन इफ इट वाज नॉट इन द कोर्स, बट इट इज इन द कोर्स थ्रू दोज एग्जांपल्स. सो वी आल्सो हैड द कांसेप्ट ऑफ 2 by 2 मेट्रिसेस ओवर द फील्ड ZP, और उसमें हमने इनवर्सेस निकाले हैं. ठीक है, और कुछ? मैम Z को हम रिंग कह सकते हैं ना? Zn, हाँ, Z रिंग है. Z is a CRU, crew, commutative ring with unity. फुल पूरा Z ना, Zn नहीं. हाँ, पूरा Z. Zn भी CRU है. Zn भी CRU है. हाँ, अभिनव का अच्छा वो है प्लान, और तुम लोगों का भी वही प्लान होना चाहिए. हैव अ रीलुक एट द एग्जांपल्स. ओके, तो ये फील्ड्स हो गए हमारे. ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ फील्ड्स. नाउ इन ऑल फील्ड्स जो 2 प्रॉपर्टीज मैंने रिंग के लिए शुरू में ही कराई थी, होमवर्क नंबर 2 या कुछ था वो ग्रुप थियरी में, तो वो रिंग एनालिसिस में भी मैंने वही सब कराया था. फील्ड तक का सारा मैंने एक्सटेंसिवली एनालिसिस के टाइम भी कराया है, ग्रुप थ्योरी के टाइम तो कराया ही है. फिर ग्रुप थ्योरी में हमने 10 एग्जांपल्स बड़े बड़े किए, लेकिन एनालिसिस में फील्ड करने के बाद हमने आर के एक्सियम्स लिखना शुरू कर दिए थे, है ना. लेकिन फील्ड तक मैंने कॉमन था दोनों पार्ट्स में. अब यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज है, रिजल्ट, सिंपल रिजल्ट इन अ फील्ड. In fact, this is true in a ring also. 1, a into 0 is 0 into a is equal to 0 for all a belonging to f. मैंने कैपिटल A कहा था ना उस टाइम पर रिंग, तो ये हमने कितनी बार किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके कर लिया था. और दूसरा था a into minus b is minus a into b is equal to minus of ab for all ab belonging to f. Okay, इसकी वजह से as a corollary we got, as a corollary to this second result, we had got minus a squared. Indices भी वही हैं जो पहले मैंने बताई थी. Minus a squared is minus of a squared, so it becomes a squared. And also you have a into b minus c becomes a into b minus a into c. ये 2 corollaries निकल के आती हैं. ये dot is distributive over minus. What does minus mean? Where minus in a field b minus c or a minus b means a plus minus b. ये है माइनस का डेफिनेशन रिंग में. ये किसी भी रिंग में, तो फील्ड में भी वही डेफिनेशन है. a माइनस बी मीन्स a प्लस माइनस बी. तो a डॉट b माइनस सी अगर ये डेफिनेशन यूज करेंगे और ये रिजल्ट यूज करेंगे तो ये आ जाता है. और बहुत बार हमने इसको यूज किया, एनालिसिस में भी यूज किया और ग्रुप थ्योरी में भी यूज किया जहां जहां जरूरत पड़ी, लेकिन मेनली एनालिसिस में यूज किया. क्योंकि ग्रुप थ्योरी में तो फिर हम एक ही ऑपरेशन को लेके चलते थे, है ना. एनालिसिस में हम दोनों ऑपरेशन यूज कर रहे थे. तो ये जो जो हमने एनालिसिस में आर के लिए किया वो फील्ड में वैलिड है.
और भी कई प्रॉपर्टीज थी इसकी, 0 इज यूनिक, 1 इज यूनिक, वो सब आई एम टेकिंग ऑल ऑफ दैट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हमने सेमी ग्रुप्स के लिए वो यूनिकनेस वगैरह कर रखा है, ठीक है। Zero and 1 are unique. Minus A and A inverse are unique. Wherever they exist, inverses are unique. Minus of A is A and A inverse is A wherever they exist. ये सब हमने शुरू में जो ग्रुप थ्योरी में प्रॉब्लम्स किए थे असाइनमेंट, उसमें ये सब कवर हो जाते हैं. कैंसिलेशन लॉ इज देयर, a plus b equal to a plus c implies b equal to c, and ab equal to ac, a not equal to 0, तो a का इनवर्स होगा implies b equal to c. तो ये सारे you just take it for granted, all of these. ये फील्ड में तो ये सब होता ही है. अभी तो हम वेक्टर स्पेस पे आए ही नहीं. मैम फिफ्थ वाले में वो जीरो नहीं है उसमें, a not equal to 0. नो मैम फिफ्थ वाला में minus of a is a. A inverse is a. For a not equal to 0. The second part is for a not equal to 0. मैंने साथ साथ लिख रही हूँ. That a plus b is equal to a plus c implies b is equal to c. It's like the cancellation law. Reverse kind of like that monotone something. The monotonicity does not come in here. There's no order. There's no order. It's a cancellation law which we did in the assignment 1 on operations. Both are operations. Na? Plus is an operation, dot is an operation. Here under dot, non-zero numbers have inverses. You just multiply by a inverse on both sides because dot is well defined. It's nothing to do with monotone property. Here you add minus a to both sides. It's nothing to do with monotonicity. There's no order. It's because plus and dot are both well defined. You can add the same thing to both sides or multiply the same thing on both sides because plus and dot are well defined operations. Thank you. Okay. So ये field का बस एक quick revision हमारा हो गया, and now we are ready to start the meaning of a vector space. Okay. I'm going to formally define. Remember that the motivation is coming from the actual vectors which people have studied for so long, those directed line segments, which is r cubed. Let V be a non-empty set and let F be a field such that, first of all, number one, all right, there exists an operation which we denote by plus. Let me call it plus with a circle for a change, because आपका f पे plus dot है ना, तो I can say f plus dot be a field. So to avoid confusion, initially I'll use a different notation for the operation on V. There exists an operation denoted by plus with a circle on V, with respect to which V plus is an abelian group. So all the 5 properties of abelian group are satisfied by V. With this plus with a circle. Now you don't want me to write them all down, do you? Again, it's like the A1 to A5 with a special plus. Okay, that's all.
तो इसका जो जीरो है इट्स नॉट द सेम एज अ जीरो हियर. ये जो v है, लेट अस इमेजिन इट एज अ सेट ऑफ ट्रीज, और f हमारा एक फील्ड हमारे पास ऑलरेडी है, राइट. तो ये v इज अ न्यू सेट लाइक अ सेट ऑफ ट्रीज. तो उसमें एक जीरो ट्री है. देयर इज एन इंटरनेट इंस्टेबिलिटी हियर, राइट. तो देयर इज अ जीरो ट्री and a plus b and b plus a are the same and so on, with the special plus. Okay, so you imagine it as a different set, and f is a different set which is a field. उसमें अपने ये operations हैं. Okay, so एक ये है. Number 2, for each alpha belonging to f and v belonging to v, यानी कि ये एक f का एलिमेंट है और ये v जो है ये trees का एलिमेंट है. There exists a unique element which we call alpha v belonging to v. There exists a unique element denoted by alpha v. कोई dot नहीं लगता इसमें. It is just alpha v belonging to v, such that the following properties are true. Number 1, alpha v plus w. अब ये प्लस में मुझे सर्कल लगाना पड़ेगा. Is alpha v plus alpha w. Okay, सारे लिख लूं, then I'll write for all v, w, etc. Right? Alpha v plus w is alpha v plus alpha w. So that is this new kind of multiplication is distributive over addition. I'll read it out later. अभी तो लिख लेते हैं सिर्फ. Ways of reading देख लेंगे. दूसरे में हम अल्फा और बीटा लेते हैं f का, और उनके बीच में एक ऑर्डिनरी प्लस आएगा, ये f वाला. तो अल्फा प्लस बीटा टाइम्स v इज अल्फा v स्पेशल प्लस बीटा v. दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, इनके बीच में स्पेशल प्लस आएगा. So both kinds of distributivity. Vector. I thought V is some set of unknown elements. They're going to be called vectors after we've defined a vector space. अभी तो definition शुरू ही हुआ है ना. Okay. V is a non-empty set. That's all we know about it. Once it satisfies all these properties, it will be called a vector space, and then we'll call its elements vectors. उसके elements को vectors कहेंगे, field के elements को scalars कहेंगे. That's how it is. The named. Number 3rd property of this new kind of product. Okay, there's a product kind of element of two different sets, है ना. एक field का है, एक V का है. तो number 3 is that alpha beta V is equal to alpha beta V. Okay, alpha beta V is equal to alpha beta V. मैम ये नया जो प्रोडक्ट है अल्फा वी का, ये किसके बीच में है? ये अल्फा बीटा, ये फील्ड के मेंबर है. अल्फा वी ये V का मेंबर है. It's an element of V. No ma'am, this is a separate operation. Yeah, it is something new. It is called an operation loosely. It is actually not an operation because it's not within a set. I'll explain what exactly it is. But we call it scalar multiplication. It's not really an operation on one set. ये दो अलग अलग सेट्स के मेंबर्स को हम कंबाइन करें. लाइक दो स्पीशीज हैं स्टार ट्रेक वाली, एक कहीं का प्लैनेट का, एक कहीं का प्लैनेट, उनको हम कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है मैम, टेक्निकली वो ऑपरेशन से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं. नहीं, बट इट्स गोइंग टू बी गिवन द नेम. It's going to be given the name scalar multiplication later. Let's just watch. अभी लिख लो, फिर हम समझेंगे. और fourth property is कि जो f का यूनिटी है 1v is equal to the 1v is equal to v. Right. Now all these are for all alpha beta belonging to f, vw belonging to v. Right. For all alpha beta in f and vw in v. ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रू है. ठीक है, यहाँ पे अल्फा और v और w. हाँ, What about 0 into v? 0 into v तो हम प्रूव करेंगे, उसमें हम वो असम्पशन नहीं है, ये एक्सियम्स हैं. ओके, सपोज यू हैव दिस एंड दिस, राइट. मैम ये वन जो है वो इसका पार्ट है ना. हाँ. 1 belongs to f. 1 is the unitary of f because there's no one नाम की चीज in v. v सिर्फ प्लस के अंदर ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप.
तो ये 1 जो है ये तो फील्ड की यूनिटी है. One of the alphas is 1. Okay, so 1v is equal to v. मैम इस 1v इक्वल टू v को अज्यूम करना जरूरी है, ये प्रूव नहीं कर सकते. नहीं, कहाँ से प्रूव करेंगे? ये फील्ड की प्रॉपर्टीज थोड़ी हैं, बिकॉज v इज नॉट अ मेंबर ऑफ f. मैम जीरो वाला अज्यूम कर लें और इस वाले को प्रूव कर लें. नहीं हो पाएगा. ओके, सो आप ये करके देन वंस दीज टू थिंग्स आर ट्रू, देन v is said to be a vector space over f. Okay, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस. अब मेरा नोट यहां पे है कि ये अल्फा v को समझने की कोशिश हम करें तो ये रिमार्क नंबर 1, actually this alpha v is like a function, rigorously speaking. Actually alpha v is a function from capital F cross v to v, where the image of alpha comma v is written as alpha v. I'm not calling it f, I'm just saying that it's a function which associates the ordered pair alpha comma v with the vector alpha v. तभी तो हम कह रहे हैं ना, for each alpha in f and v in v there's a unique, I must say unique, books don't say, they leave it out, there's a unique alpha v. तभी तो वो फंक्शन बनेगा, नहीं तो वो फंक्शन होगा ही नहीं अगर ये यूनिक नहीं है. So rigorously speaking, this alpha v business is a function from f cross v into v. So we should actually say there exists a function from f cross v into v where the image of alpha v is written as alpha v. अब ये rigorous हो गया and satisfies all this. This alpha v satisfies all this. अब ये rigorous हो गया, and this function is called scalar multiplication. We call this function, actually it's not an operation but it's the convention to call it scalar multiplication. That's a convention. The scalar multiplication is actually a function from f cross v into v. ये जो हम कहते हैं ना alpha v belongs to v, so we say v is closed under scalar multiplication. Okay, now my remark number 2, field में भी क्वेश्चन. हाँ बोलो. अल्फा v is same as v times alpha. No, v times alpha नहीं लिखा जाता है, alpha v लिखा जाता है. मैम अल्फा v जो है वो v का पार्ट, इट इज In the member of v, it's a member of v. member of v, yeah, it's member of v. But ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैम, वो अल्फा v का मेंबर कैसे बन गया? वो डेफिनेशन से बन गया. We needed to be a member of v, नहीं तो हमारा डेफिनेशन फॉल थ्रू कर जाता है. तो v का मेंबर है, अल्फा v भी v का मेंबर है. हाँ, v भी v का मेंबर है, अल्फा v भी v का मेंबर है. तुम्हारे वेक्टर्स में नहीं था ये? आपका अगर abc है वेक्टर तो अल्फा abc क्या था? अल्फा a कॉमा अल्फा b कॉमा अल्फा c, वो भी v का मेंबर है. अल्फा टाइम्स अ वेक्टर वाज अ वेक्टर. उसमें क्या परेशानी? सारा मोटिवेशन वहीं से आया है. And alpha. हाँ, Why can't we do v alpha? you can do it, but then you will be going against the convention which is used all across the world. Oh, okay, that's all. Okay. Yeah. Maybe it's just a matter of convention. It's a matter of Okay, convention. thank you. So we call this function scalar multiplication. So scalar multiplication is not an operation. Technically speaking, it is a function from one set into another set. The cross product of these two sets into the set. Okay, now
अनदर इंपॉर्टेंट थिंग मैंने एफ में हमें पॉइंट आउट नहीं किया क्योंकि इट्स समथिंग विच यू ऑलरेडी डन. फील्ड एफ में कई चीजें हेरिडिटरी होती है ना, जैसे अबिलियन लॉ, एसोसिएटिव लॉ हेरिडिटरी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हेरिडिटरी होता है. वो सब सबसेट के लिए कभी प्रूव नहीं करना पड़ता है ना. जब आपने सब ग्रुप्स किए तो आपने कहा था एसोसिएटिव लॉ तो इनहेरिटेड है, ठीक है. इस तरह से कई चीजें इनहेरिटेड होती हैं. क्लोजर इनहेरिटेड नहीं होता है कभी. यूनिटी का एग्जिस्टेंस प्रूव करना पड़ता है इन द सबसेट. एडिटिव आइडेंटिटी का भी प्रूव करना पड़ता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इनहेरिटेड है. अब इसी तरह से हमको देखना इनमें क्या क्या इनहेरिटेड है. ग्रुप का तो पार्ट आपको पता है, एसोसिएटिव लॉ एंड अबिलियन लॉ इनहेरिटेड. ओके. In this, what is inherited? 2. The properties. Number 2, 1 to 4 are hereditary. कभी सबसेट के लिए प्रूव नहीं करना है. ये 4, ये क्लोजर इनहेरिटेड नहीं है, लेकिन ये सारे हेरिडिटरी है. यानी कि अगर आप V का सबसेट लोगे W, तो वो W में 1 to 4 अपने आप ट्रू होगा, लेकिन अल्फा V बिलोंग्स टू W वे V बिलोंग्स टू W ये नहीं मालूम. हमको क्लोजर दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये 4 इनहेरिटेड होंगे. हम सबस्पेस करेंगे बहुत जल्दी. सब ग्रुप की तरह होता है सबस्पेस, तो सबस्पेस में जो इनहेरिटेड है वो हमको दिखाने की जरूरत नहीं है. ओके. एंड इन 1 यू कैन सी A2 A3 आर इनहेरिटेड. वो तो हमको पहले से पता था ग्रुप थ्योरी से. आई डोंट हैव टू मेंशन इट. But this is something new, so I'm mentioning it. You can mention in 1. In 2, तो 1 to 4 are inherited. In 1, A2, A3 are inherited. In fields, A1, A2, A3, M2, M3 and D are inherited. वो मैं लिख नहीं रही हूँ, that's going back too far. तो वो field में भी many things are inherited. और vector space में these are inherited by subsets of V. Okay, so hereditary means inherited by subsets of V. मैम यहाँ जो हाँ both ways distributivity है ना मैम यहाँ पे. हाँ, ये दो हैं. 1 and 2 are two separate properties. तो you can say both ways है. Scalar multiplication is distributive. 1 second. Scalar multiplication is distributive over vector addition, and scalar addition is distributive over scalar multiplication. We don't have to remember it in words. Just remember these. हाँ बोलो कुका. Oh, you were saying something one would have to prove, which was not Closure, existence of identity, existence of inverses are inherited. Inherited means by subsets of V. I'm not touching F. By subsets of V. This will be useful when I look at subspaces. By subsets of V. This is from group theory, we already knew it. This is additional thing that I'm pointing out to you, that these are inherited. But no, Ananda, earlier when you were talking about 2, you were saying something is not inherited. Yeah, this alpha V belonging to V is not inherited. Even if V is in a subset W and alpha is a scalar, then alpha W may not be in W. जहां जहां belonging to होता है वो inherited नहीं होता है. So closure is never inherited. So this is called closure under scalar multiplication. This is not inherited. Has to be proved. Okay. So I think we've done quite a bit for today. Ma'am, last question. हाँ. Ma'am, ये आपने लास्ट में क्या लिखा है? Subsets of V के पहले क्या है? Are inherited by subsets of V. By. In case there's a doubt in your mind. Huh?
मैम दूसरा क्वेश्चन था जो वी के मेंबर्स हैं वो क्या फंक्शंस है मैम? वी के मेंबर्स नहीं, वी के मेंबर्स आर जस्ट वी के मेंबर्स. सो आपने बोला ना अल्फा वी इज अ फंक्शन. अरे दैट इज जस्ट दिस फंक्शन फ्रॉम हियर टू हियर. These are elements. फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट को ले जाता है. वो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को थोड़ी हम फंक्शंस कहते हैं. फंक्शन वो रूल है जो इसके हर मेंबर को इसके कोई मेंबर से एसोसिएट करता है. मैम alpha v is a function from f cross v to v. Alpha v is alpha v is a vector, right? So alpha comma v going to alpha v is a function. It's scalar multiplication. The concept of alpha v comes from there, right? Alpha v going to alpha v is a function. So alpha v is the image under a function, if that is causing confusion. I don't want to write this twice. Alpha v is the result of a function or the image of alpha comma v under a function. I've written it again, right? So the concept of alpha v, for each alpha in f and v in v, the existence of alpha v in v is basically the existence of a function from f cross v to v, where alpha v is the image of alpha comma v under that function. Okay. I'm not using f, small f or anything here. That's not required. I'm just telling you conceptually what is it. Conceptually it is not an operation. But we still call it a scalar multiplication. That's a convention. Okay. This is just to understand it rigorously. बाकी तो हम भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही कहेंगे इसको और ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. ठीक है. अब एक लास्ट चीज कहने के बाद मैं बंद करती हूँ कि आफ्टर दिस वी हैव दिस इज रिमार्क 1, रिमार्क 2 and remark 3 is that remark 3 elements of V are called vectors. Once you prove this vector space hai ye, elements of V are called vectors for obvious reasons, and elements of F are called scalars. Okay, so that's why this is called scalar multiplication. This is number 3. So I hope you've written it all down because अब मैंने मिटा दिया. Yes मैम लिख लिया. ठीक है, गुड. तो बस अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं. अगली बार हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे वेक्टर स्पेसेस के और फिर हम आगे बढ़ेंगे, सब स्पेसेस वगैरह करेंगे. ठीक है, धीरे धीरे बिल्ड करेंगे. Thank you, ma'am. So I'm going to keep the subject matter abstract for some time. बीच-बीच में थोड़े examples बताती जाऊंगी, but we have to focus on the abstract nature of the subject. That is my interest. वो classical nature में मुझे बिल्कुल interest नहीं है. एक book recommended है, but I don't want to recommend that book. I'll think look for some other good books. हम लोग ये 2-3 किताबें होती थी हमारे जमाने में. One is Topics in Algebra by Ian Herstein. ग्रुप थियोरी के लिए तो ये बेहतरीन है. रिंग्स भी आएंगे इसमें, लेकिन हमें रिंग्स नहीं करना, और वेक्टर स्पेसेस और फील्ड्स भी हैं इसमें. इट्स वेरी रीडेबल बुक. एंड देन यू आल्सो हैव एक हमारे जमाने में ये यूज होता था वेक्टर स्पेसेस के लिए, हॉफमैन एंड कुंस. यू मे नॉट लाइक इट दैट मच, बट इट्स used to be used at one time. I'm going to look for the book which is used in semester 6. I've forgotten the name. Maybe I'll try and get the syllabus and we'll just look at the recommended book of semester 6. That is Advanced Linear Algebra. And we may look at that for reference.